Hello and welcome again, my dear friends. This is the next chapter, that is General Organic Chemistry GOC, that we are going to talk about. One thing I must tell you, if you are new to my channel, please do not hesitate to subscribe and press the bell icon to get the latest updates. Now, General Organic Chemistry हम लोगों ने start करनी है. So before talking about many things into it, let me tell you what is organic chemistry. So organic chemistry is basically the branch of chemistry that deals with the study of two important compounds. Number one is hydrocarbons, and their derivatives. So organic chemistry is basically branch of chemistry that deals with the study of hydrocarbons and their derivatives. We call that chemistry organic chemistry. Now, what do we mean by hydrocarbons? Hydrocarbons are actually compounds which are made of hydrogen and carbon atoms. वो वाले compounds जो बने हुए होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स के, those compounds are called as hydrocarbons. For example, आपके पास है methane. Methane is basically made of carbon and hydrogen atom. This is an organic compound. Similarly, we have ethane. This is also made of carbon and hydrogen atoms only, so this is hydrocarbon. And derivative is what? Derivative is actually all those compounds. All compounds obtained from hydrocarbons. All compounds obtained from hydrocarbons by replacing hydrogen with other atoms or groups like oxygen, sulfur, nitrogen, halogens, etc. इनको हम नाम देते हैं derivatives. For example, for instance, हमारे पास है CH3Cl. This is chloromethane or methyl chloride. So this is formed when methane जो है उसमें हम लोगों ने HCl को ऐड किया और हाइड्रोजन को निकाला, तो it becomes CH3Cl. So we have obtained this compound from methane. So this is becomes the derivative. So derivatives are all those compounds which are obtained from parent hydrocarbons by replacement of hydrogen with other atoms or groups. We call them derivatives. ये derivatives, ये वाले compounds और ये hydrocarbons जो है, इनको study करने के लिए जो हमारे पास chemistry है, we call that chemistry organic chemistry. Now, ये जो दो category of compounds है, इनको collectively हम नाम बोलते हैं. These are collectively called as organic compounds. So hydrocarbons and their derivatives are collectively called as organic compounds. So organic compounds are basically hydrocarbons and their derivatives. Study of these hydrocarbons or study of these organic compounds, we call that organic chemistry. I hope you understand it. Now, how do we classify these organic compounds? So let's look at classification. Classification of organic compounds. Organic compounds are broadly classified into two categories. So we have here organic compound. It's broadly classified into two categories. Number one is acyclic. Number second is cyclic. So we have cyclic organic compounds. We have acyclic organic compounds. Acyclic means open chain. It means open chain system. They're also called as aliphatics. Aliphatic organic compounds. And this is closed system. मतलब closed or ring form. Ring form. So for example, this acyclic can be further classified into two categories.
One is saturated. Next is unsaturated. So saturated here means that all those open chain systems which are having only single bonds, they are called as alkanes. They are saturated, and our example is alkane. The general formula will be CnH2n plus 2. So n is equal to 1, 2, 3, dot. So this is if n is equal to 1, this becomes methane. If n is equal to 2, this becomes ethane. So all these contain single bonds only, so it's saturated, and it comes in open chain category. For example, अगर आपके पास propane है, so you are having, for instance, CH3 single bond, CH2 single bond, CH3. So this is propane. You can write in bond notation as like this. So this is the bond notation, and this is the condensed form of. This is this another picture. So you have CH3, CH2, CH3. This is written in this way also. ये जो ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है. ये वाला कार्बन जो है, इसको एक बॉन्ड यहाँ से है with the next carbon. So इसके तीन balances जो है that are satisfied by 3 hydrogen atoms. So ये जो कार्बन है, इसके दो bonds यहाँ से एक है, यहाँ से एक है. मतलब है कि इसको जो दो bonds हैं, they are satisfied by 2 hydrogens. Same is here. You have this carbon. It is attached with this carbon by single bond. So you have 3 hydrogens attached to this carbon. We are not showing these hydrogens in bond notation. So this is the single bonds only, so it's saturated. Unsaturated here means that अगर इसमें multiple bond होंगी, so if it contains multiple bonds. Multiple bonds here means that it contains double bond or triple bond. So in saturated we have only single bonds. In unsaturated we have multiple bonds. That means we have double bond or we have triple bond. For example, हमारे पास है alkene. Alkene का general representation है CnH2n, where n is equal to 2, 3, dot, so on. So if n is equal to 2, the compound will be C2H4, that is ethene, that is CH2, double bond CH2. Unsaturated. So open chain system है, multiple bond है, unsaturated category में आएगा, that is acyclic. Similarly, अगर आपके पास alkyne है, दूसरा example, but it contains triple bond. So इसमें alkene में जो है वो double bond है खाली. Alkyne में क्या है? Alkyne में triple bond होता है. So general formula is CnH2n minus 2. So n is equal to 2, 3, so on. So if n is equal to 2, it becomes CH triple bond CH. This is called acetylene or ethyne. Acetylene or ethyne. So these are the open chain structures, which means they are acyclic, they are aliphatic, and if we have only single bonds in it, we are called them as saturated hydrocarbons, saturated organic compounds, and they belong to alkane category. If we have double bonds, it is unsaturated category organic compounds, and we have triple bond, they come in acyclic category, and in which they are unsaturated organic compounds. I hope you understand this. Now next is cyclic. So in cyclic category मतलब ring form, organic compounds in ring form, we classify them into 3 categories. Further classified into 3 categories. The first is they are alicyclic. Alicyclic means simply ring form. Ring form can be saturated or unsaturated. Can be saturated or unsaturated. For example, आपके पास ये है. So ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है. ये वाला कार्बन, इसके 2 बॉन्ड्स हैं, एक यहाँ से दूसरा यहाँ से. इसके 2 बॉन्ड्स जो है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है. Similarly here, 2 bonds यहाँ से है with other 2 carbon atoms. So it has 2 hydrogens attached to it to satisfy its 4 valencies. So this is how it's we don't put here hydrogens, we are putting only the carbon atoms in this skeleton. This is called as cyclopropane. It's alicyclic compound. Similarly we have this, it is cyclobutane. Similarly we have this, it is cyclopropene. So this can be saturated, this can be unsaturated. Similarly we have this, it is cyclopentene because there is one double bond over here.
So these are called as alicyclic compounds. Alicyclic compounds which can be saturated or which can be unsaturated also. Moreover, we have next category, that is heterocyclic compounds. Heterocyclic means in which one vortex is occupied by heteroatom. One vertex is occupied by heteroatom, which means like oxygen, sulfur, nitrogen, etc. Other than carbon. So heteroatom here means other than carbon, which can be oxygen, sulfur, or nitrogen. So one vertex in a ring is occupied by heteroatom. We call those cyclic compounds as heterocyclic compounds. For example, you have this. So एक vertex जो है in suppose cyclopentane that has been replaced by means of heteroatom or occupying the heteroatom, we call this as furon. So this is a heterocyclic compound. Similarly, this is called as pyrrole. Similarly, we have this sulfur over here, two lone pairs are there, double bond. This is called as thiophene. Similarly, we have one more thing that is over here, a 6-membered ring system in which nitrogen is here lone pair. So you have double bond over here. This is called as pyridine. So all these are heterocyclic compounds. Why? Because there is one vertex in the ring that has been occupied by heteroatom like oxygen, nitrogen, or a sulfur. We call these compounds as heterocyclic. These heterocyclic compounds can be aromatic also. So what is aromatic we'll be talking about from short while. So number third is basically the aromatic systems. So we have number third, that is aromatic. Now what are aromatics? Basically they are the cyclic systems. So what they are, aromatic compounds are those compounds which are having high stability. They are highly stable compounds. And आप कैसे पहचानेंगे इन compounds को? We have 4 criteria for that. So 4 conditions for an organic compound to become aromatic. We have 4 conditions. For an organic compound to become aromatic. They are, that is, number 1 is it must be cyclic, it must be planar, it must be conjugated. That is, all carbons sp2 hybridized. All atoms, we can write all atoms all atoms of ring, they must be sp2 hybridized. So once a compound is cyclic, it is planar also, and it is conjugated, that is all carbons are sp2 hybridized, and then it obeys a rule that's called Huckles rule, which says the molecule must contain 4n+2 pi electrons. N is equal to 0, 1, 2, ... मतलब अगर आप n को, if n is equal to 0, it's having 2 pi electron. If n is equal to 1, it's having 6 pi electron. You can write here, if it's 0 is 2 pi electron, if it's 1, 4 ones are 4, 4 plus 2 is 6. If n is equal to 2, then it's 10 pi electron. If n is equal to 3, it's 14 pi electrons, etc. So मतलब ये कि अगर उस मॉलिक्यूल में या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 या 10 और 14 और so on, using this
formula to find the number of pi electrons, then that obeys Huckles rule. Once this rule is obeyed, once the system is conjugated, once it's planar and cyclic, the compound is said to be aromatic and it's having high stability. Now, what is conjugation? Now, for conjugation, we have this kind of thing, that is, we have alternate single and double bonds. मतलब एक double bond फिर single bond फिर दूसरा double bond. This is in conjugation. So double single मतलब alternate single and double bonds, we call that conjugation. Double single lone pair, this is एक atom होगा यहाँ पे, उसके lone pair है, this is also in conjugation. So double single lone pair is conjugation, double single double is conjugation. So double single एक एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो भी कंजुगेशन में है. डबल सिंगल एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट्स आल्सो इन कंजुगेशन. डबल सिंगल एक एटम पे एक रेडिकल होगा, दैट्स आल्सो in conjugation. So all these are conjugated systems. So conjugation here means either we have alternate single and double bonds, or we have a double single and then lone pair, double single then negative charge, double single radical, double single plus charge. So all these are conjugated systems, and they are conjugated systems. Once they are conjugated, all carbons will be sp2 hybridized. So ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा. So all these are sp2 hybridized, and once it obeys Huckles rule, we call that system as aromatic system. For example, अगर आपके पास बेंजीन है, you are having benzene. So this is benzene. बेंजीन में क्या है? बेंजीन में अगर आप देखेंगे ये साइक्लिक है. सो इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर, एंड देन इट इज कंजुगेटेड आल्सो. व्हाई? बिकॉज देयर इज ऑल्टरनेट. देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इट्स कंजुगेटेड, एंड ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. कैसे पता चलेगा? हमेशा याद रखना चाहिए. आई हैव आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हुज लिंक हैज बीन प्लेस्ड इन द डिस्क्रिप्शन. उसमें मैंने बताया है आपको कि अगर एक कार्बन होगा, उसमें चारों के चार बॉन्ड सिंगल होंगे तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अगर ये कार्बन होगा, उसमें जो है एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड मतलब देयर आर 3 सिग्मा एंड 1 पाई. खाली एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे 4 सिग्मा है. जब 4 सिग्मा होंगे तो sp3 होगा. जब 3 सिग्मा 1 पाई होगा तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. जब 2 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सिग्मा और 2 पाई होंगे, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब ये sp होता है. मतलब 3 सिग्मा 1 पाई जब होगा तब ये sp2 होगा. अगर 2 सिग्मा 2 पाई होंगे, मतलब 2 पाई होंगे, और वी कैन से ट्रिपल बॉन्ड होगा एक कार्बन के साथ, सो इट इज sp. अगर इसमें एक कार्बन में 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड एक ही कार्बन में, मतलब 2 सिग्मा 2 पाई होंगे, जैसे इसमें था, तो इट इज अगेन sp. So you can simply remember it like this, that if we have all carbon single, it is sp3. If there is one double bond per carbon, it is sp2. If there is one triple bond per carbon, it is what? It is sp. If we have 2 double bonds per carbon, so it is sp. So sp होता है जब 2 डबल बॉन्ड होंगे पर कार्बन, लाइक दिस, और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा पर कार्बन, तब भी sp है. sp2 कब होता है? जब एक डबल बॉन्ड होगा पर कार्बन, वी कॉल दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक. दूसरी बात आपको याद क्या रखनी है, आपके पास कार्बोकेटाइन्स होते हैं, कार्बेनियंस होंगे. अगर आपके पास कार्बोकेटाइन होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है. अगर आपके पास कार्बेनियन होता है या रेडिकल होता है, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3. माइंड इट, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. लेकिन अब मसला यह है कि विल बी टॉकिंग अबाउट दीज कार्बोकेटाइन्स, कार्बेनियंस, फ्री रेडिकल्स लेटर ऑन. जब हम इस चैप्टर में घुसेंगे पूरी तरह से, तब हम इनका जिक्र करेंगे वन बाय वन. लेकिन फिलहाल आप याद रखिए, जो कार्बन पे जो प्लस चार्ज होता है, वी कॉल दैट कार्बोकेटाइन्स. इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है. कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा, वी कॉल देम कार्बेनियंस. कार्बन पे रेडिकल अगर होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वी कॉल दैट फ्री रेडिकल. सो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है. लेकिन जब ये वाले कंजुगेशन में होते हैं, व्हेन दे आर इन कंजुगेशन, व्हेन दे आर इन कंजुगेशन. अब अगर कार्बेनियन वाला
या फ्री रेडिकल वाला कंजुगेशन में होगा, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सो नॉर्मली लोन जब होंगे, जब अलग होंगे विदाउट कंजुगेशन, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन जब ये वाले कंजुगेशन में होंगे तब इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2, दैट इज sp2। ठीक। सो वन इज देयर कंजुगेशन, कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, कंजुगेटेड लोन पेयर जो है, अभी मैंने आपको यहां बताया है कंजुगेशन इज डबल सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल। सो अगर आप देखेंगे यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर इन कंजुगेशन, सो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं, दे बिकम पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे बिकम पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस बिकम्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। So whenever we have electrons, lone pairs या negative charge or radical in conjugation, they are considered as pi electrons. They are considered as pi electrons, pi bonds, because they will be involved in pi bond because of resonance. ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ because of resonance. So ये दो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ होंगे pi bond बनेगा, so they become pi bonds, मतलब pi electrons. So आपको ये चीजें जो है याद रखनी है, ध्यान में रखनी है. This is important. So we are talking about aromatic compounds, those compounds which are highly stable. And कैसे पहचानेंगे आप, चार कंडीशंस आपको याद रखनी है. इट मस्ट बी साइक्लिक, रिंग फॉर्म में होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए. इट शुड बी कंजुगेटेड, विच मीन्स डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल radical. This is called conjugation. All carbons are sp2 hybridized. आपको कैसे पता चलेगा? I told you right now, अगर सिस्टम में एक डबल बॉन्ड होगा पर कार्बन, we call that sp2 hybridized. ये आप याद रखेंगे. और कार्बोकैटायंस हमेशा sp2 होते हैं, कार्बेनियंस और रेडिकल जो है वो sp3 होते हैं, लेकिन जब ये कंजुगेशन में आते हैं तब इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है. सो इस वक्त इसका कार्बेनियन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है बिकॉज इट्स इन कंजुगेशन. इस लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इस रेडिकल का भी sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज दिस इज इन कंजुगेशन. एंड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकम पाई इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड once they enter into conjugation. And now they must obey Huckles rule, which molecule must contain either 2 pi electrons, 6 pi electrons, 10 pi electrons or 14 pi electrons, or we can say in general 4n plus 2 pi electrons. जब ये चार कंडीशंस सही होंगे तब जो है सिस्टम बनेगा एरोमेटिक, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हुआ करती है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ये बेंजीन की एग्जांपल थी, कंजुगेटेड था, ऑल कार्बन sp2. और अगर आप देखेंगे इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इज एरोमेटिक. सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड. हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप यहां पे देखेंगे ऐसे. So this is the cyclopropene. Cyclopropene, अगर देखेंगे it is cyclic, nevertheless it is cyclic, that's true. It's planar also, that's again true. It is not conjugated. It's not conjugated, not conjugated. Why? Because there is double bond, then single bond, then single bond. Double bond, single bond plus charge होना चाहिए तब conjugation में आएगा. So it is not aromatic. Not aromatic. अगर आप इसका देखेंगे in contrast, इसका देखेंगे इस वाले का. So we have double, single, plus. It's double, single, plus. So it's in conjugation. So it's cyclic. It's planar also. It is conjugated also, right? And this carbon is sp2 hybridized because इसमें एक ही डबल बॉन्ड है. इस कार्बन पे एक ही डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. इस कार्बन पे प्लस चार्ज है मतलब कार्बोकैटाइन है, लेकिन ये कंजुगेशन में है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. मतलब और कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन. दिस ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन. 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ही यहाँ. अगर आप देखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, सो इट्स एरोमेटिक. सो इट इज एरोमेटिक. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे. If you take this one, it's double, single, it is cyclic, that's correct. It is conjugated also, it's planar also. कैसे conjugated है? Double, single, minus, so it's in conjugation, fine. ये कार्बन क्या है? sp2 है. ये कार्बन भी है sp2. क्यों? बिकॉज इसमें एक ही डबल बॉन्ड है. देयर शुड बी 1 डबल बॉन्ड पर कार्बन, 1 डबल बॉन्ड पर कार्बन, आई टोल्ड यू. एंड कार्बेनियन का हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली होता है sp3, लेकिन इट्स इन कंजुगेशन टू ये भी sp2 ही है. सो ऑल कार्बन्स आर sp2. नाउ हकल्स लॉ अगर देखेंगे इसमें ये 2 है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है. 2 और 2 हो गए. ये क्यों पाई इलेक्ट्रॉन्स है? बिकॉज दिस इज इन कंजुगेशन. सो आई टोल्ड यू जब पाई इलेक्ट्रॉन्स, जब नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर्स या रेडिकल कंजुगेशन में होगा तब वो पाई इलेक्ट्रॉन
पाई इलेक्ट्रॉन बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, दे फॉर्म पाई बॉन्ड, सो दे आर टू बी काउंटेड. सो ये दो और ये दो हो गए 4, सो इट्स हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन. सो इट डजंट ओबे Huckles rule, so it is not aromatic. This is aromatic and these two are not aromatic. Next example हम लेंगे. अगर आप देखेंगे इसमें इट्स हैविंग डबल सिंगल, ये कार्बन sp2 है, ये भी ये नाइट्रोजन sp2 है, ये सारे कार्बन sp2 है बिकॉज दे आर ओनली सिंगल बॉन्ड्स. एंड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंजुगेशन में है. और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 हो गए 4, 2 हो गए 6. इट्स हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज एरोमेटिक. इट्स पाइरिडीन. अगर आप देखेंगे इसमें दिस इज कॉल्ड फ्यूरॉन, it's called thiophene, and this is called as pyrrole. I told you earlier. Now देखिए डबल साइक्लिक तीनों है, प्लेनर भी तीनों है. अब कंजुगेटेड देखिए, ये कार्बन क्या है? sp2 है बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन कंजुगेशन. सो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल इन कंजुगेशन है. जब कंजुगेशन में होगा तो ये लोन पेयर क्या बनेगा? sp2 बनेगा. मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसमें भी sp2. सारे कार्बन sp2 है, सारे कार्बन यहाँ पे भी sp2, सारे कार्बन और नाइट्रोजन सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो Huckles अगर देखेंगे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 हो गए 4, और ये 2 भी काउंट करने हैं बिकॉज दे आर इन कंजुगेशन, दे बिकम पाई इलेक्ट्रॉन. सो वी हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 6 pi electron, same here, and 6 pi electron, same here. So all are aromatic. They are all aromatic. So furon, thiophene, and pyrrole, they are all aromatic in nature. Which is more, which is less, that is not the talk of today's lecture. And this is what is aromatic systems. This is what is called as aromatic system. And aromatic system में आपको आएगा benzenoid compounds and non-benzenoid. So aromatic category में आते हैं आपको benzenoid और non-benzenoid. मतलब containing benzene ring, जिन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग होगा एरोमेटिक होंगे, we call that benzenoid aromatic compounds. and non-benzenoid मतलब without benzene ring, उनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, उनको नॉर्मली हम नाम बोलते हैं एनोलीन्स. एनोलीन्स आर बेसिकली एरोमेटिक सिस्टम्स, रिंग फॉर्म, तो लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं होता है, सो वी कॉल देम एनोलीन्स. I hope you understand it. I hope you understand it. We can have one example for aniline. So this is one of the examples that I have shown over here. So this is basically a non-benzenoid system, and this is aromatic. It's called aniline 18. इसमें 18 carbons है, so it's called as aniline 18. अगर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So we have 18 carbons in it, so it's called aniline 18 or 18 aniline. Aniline 18 or 18 aniline. This is how we name it. So this is non-benzenoid system without benzene ring. So these are the aromatic systems. अगर आप इनका साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन के Huckles रूल ओबे करेगा. तो सारे सिस्टम जो है एरोमेटिक है. और बेंजीनॉइड सिस्टम यही होते हैं अगर आपके पास सपोज नेफ्थलीन है. So if you have naphthalene, it's aromatic because it contains, it's aromatic, it obeys the conditions of aromaticity, and now it's having benzene ring, so it's called a benzenoid aromatic system. I hope you understand it. In the next video, hopefully we shall be talking about the types of carbon atoms in an organic compound. Till then, take good care of yourselves. If you like my videos, please do not hesitate to share and subscribe my channel. Thank you very much.